In your trading and your P&L account, what have we learned? In your trading account, only one income is recorded. Which income goes under trading account? Sales. Only sales. Only sales income goes in trading credit. Okay. Rest apart, every other income goes to sorry, P&L credit. So only one income goes under trading credit, that is sales. Rest apart, every other income goes to P&L credit. Is that right? What about expenses? What type of expenses we record in trading account? Direct expense. Direct expenses. Expenses related to purchase of goods या फिर production of goods, right? And rest apart, all the other expenses go to P&L debit, like your office expense, salaries, rent, rates, taxes, electricity, okay, insurance, printing and stationery, postage and telegram, traveling, carriage outward, advertisement. But ऑफिस रिलेटेड है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड है, बैंक चार्जेस है, इंटरेस्ट है, फाइनेंस रिलेटेड है, सब कुछ P&L डेबिट. परचेज और प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करता है, वो सब P&L डेबिट. ओके. And then we saw assets and liabilities. Okay, what are the types of assets? You have intangible assets, tangible assets, you have investments, and you have current assets, short-term assets. And on the liability side, you have capital, you have long-term liabilities like your loans, and you have current liabilities, the short-term liabilities, which you are supposed to pay within a span of 1 year. So ये तो हुआ आपका normal format of answer. इसके अलावा भी there are certain items in the problem called as adjustments. What are adjustments? Unrecorded transactions. They are basically unrecorded transactions, unrecorded entries जो आप final account stage पे directly enter करते हो. Can you tell me the two effects of closing stock? The first adjustment which you have. Credit side and asset. Trading account, credit side and assets. Why do you record it on trading credit? What is closing stock basically? Prepaid purchases. Prepaid purchases. Okay, ज़्यादा goods खरीद लिया है जो ये साल use नहीं किया है, हटाओ. Instead of subtracting from purchase, you record it on trading credit. And second effect is asset. ये asset of this year will become opening stock of next year. Next year. Closing stock of this year shall become opening stock of next year. Is that clear? The closing of this year becomes opening of next year. Asset of this year becomes expense of next year. Then we have depreciation. What are the two effects of depreciation? Profit and loss account. P&L debit minus and from assets less and asset. from So respective subtract from respective assets and profit and loss debit side because it's your indirect expense and obviously asset का value कम हो गया है, so you need to subtract it. Okay, asset का value कम हो गया है तो आपको subtract करना है. And second effect is P&L debit. What about appreciation? What are the two effects of appreciation? Profit and loss credit and add to the respective. Profit and loss credit side and add to the respective asset. Profit and loss credit side and add to the respective asset because asset ka value बढ़ गया and it's your gain. Okay, P&L credit side because it's your gain. So like that, there are all the 15 adjustments which we have learned: outstanding expense, prepaid expense, income receivable, received in advance. Then we saw goods ka 4 adjustments: goods lost by fire, floods, theft, goods insured, uninsured, goods withdrawn for personal use. Okay, then we saw FBD, NRDD wala adjustments. All these adjustments we saw in brief. Now, along with the problem, we'll learn them in detail again. Okay, again with the individual problem, I'll be explaining one by one everything. So let's take a problem. But याद क्या रखना है? Basic concept याद रखना कि every item of trial balance has how many effects? Every item of one effect has one effect. ट्रायल बैलेंस का हर एक आइटम का एक ही इफेक्ट होगा because it's a recorded thing. Whereas every item of adjustments will have how many effects? Every item of adjustment will have how many effects? Two effects. Every item of trial balance will have just one effect, whereas every item of adjustment will always have two effects. Every item of adjustment will always have two effects because there are unrecorded entries and we need to give both the effects, debit and credit. So let's start.
with the problem, take out sum number 17. All of you take 17th sum. 17th sum ले लो. Take out sum number 17. Draw the columns. Must be having for 3 sums. Sum number 17. Please mark it down. From the following trial balance of Mr. Kapil. So in the books of Mr. Kapil, you're supposed to make trading account, profit and loss account, and balance sheet as on that date. Okay. Start with opening stock. Where you will write opening stock? Opening stock कहाँ जाएगा? Trading debit. Trading debit. Okay. Because last year का closing stock becomes this year का opening stock. Sum number 17. Wages and salaries. Where do you put wages and salary? Remember at the time of discussing the Trading proposed one? debit. Trading debit. Trading debit, because it has Higher proportion. bigger proportion of wages and smaller proportion of salaries. Okay, so that will go to trading debit. What about carriage? Trading debit. Carriage is also trading debit. Okay, carriage के बारे में कुछ नहीं दिया है तो assume करना है inverse है, goods को खरीदने पे हो रहा है. So that will go to trading debit. What about purchases and sales? Debit. Trading Credit. debit and trading credit. Purchases and sales will go to trading debit and trading credit. Bills receivable and bills payable. What are bills receivable? Assets. Assets. And what are bills payable? Liabilities. Liabilities. एक से पैसा आना बाकी है, एक को पैसा देना बाकी है. So one is asset, one is liability. Write there A and L. A for asset, L for liabilities. Only rent is given. Which rent I don't know. Whether it is paid or it is received, I don't know. Right. It is on the debit side. That means it is paid, right? So rent paid कहाँ जाएगा? Only rent paid. Where do you write rent paid? Profit and loss. P&L account debit side. Absolutely right. P&L account debit side. Then we have RDD. Okay. RDD is which RDD? Is this NRDD or is this ORDD? ORDD. Why ORDD? Because it must have been the NRDD of last. Year. How do you assume that? Because NRDD will be there in one of the adjustments. Absolutely right. NRDD will be present in the adjustment part. Okay. What is this NRDD ka concept and ORDD ka concept? I'll explain again when we do that adjustment. Filal, just write there. This is ORDD. In the trial balance, just mention kar do it is ORDD. ORDD. And where it will go to minus from Bad debts. formula. Yeah. Minus from bad debt. Minus from formula of bad debt. Minus from formula लिख दो. P&L debit minus. P&L debit minus from formula. Okay. That's your ORDD. हमेशा याद रखना ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी होता है ओआरडीडी होता है, एडजस्टमेंट में जो आरडीडी होता है एनआरडीडी होता है हमेशा. ओके. ट्रायल बैलेंस आरडीडी इज ओआरडीडी, एडजस्टमेंट्स वाला आरडीडी इज एनआरडीडी, न्यू आरडीडी. Sundry debtors and sundry creditors. Where you will write sundry debtors and creditors? Sundry debtors, asset, creditors, liability. Sundry debtors are assets, creditors are liabilities. Absolutely right. Then we have returns. दो returns दे दिया है. कौन सा returns है? Which one is which one, you know?
debit wala is this one Sales sales returns. return and Debit credit wala is is purchase. sales returns and credit is purchase returns. Okay. Opposite होता है. Sales का credit, sales return debit. Purchase का debit, purchase return credit. Then we have machinery. Where do you put machinery? Machinery is Asset. asset. Traveling expenses. Where do you put traveling expenses? Profit and P&L debit. Profit and loss debit side. Profit and loss debit side. Cash at bank is asset. Cash at bank matlab bank balance. That's your asset at the end of the year. Buildings are asset. Fixed assets. Buildings are assets. Office expenses are P&L debit. Office related है, so P&L debit. Advertisement for 3 years, 3,000. Okay. Now, this is called as a hidden adjustment. This is called as a, yes. This is called as a hidden adjustment. Why it is called hidden adjustment? because it's given for 3 years. So we'll have to write advertisement 3,000 minus 2,000. Exactly. Perfect. Prepaid advertisement, and then it'll go to the asset side also. Why do you write to prepaid for 2 years? Because we consider expenses of only 1 year. Absolutely right. When you make final accounts, you need to show expense and income of only 1 year, right? But यहाँ पे दे दिया you have paid advertisement for 3 years. यहाँ पे दे दिया you have paid advertisement for 3 years. So if 3 years का it is 3,000, then 1 year का it is how much? 1,000. Are you getting that? So ideally आपको कितना टाइम का एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस पे करना था, या फॉर दैट मैटर कोई भी एक्सपेंस कितने टाइम का पे करना है आपको? जब आप साल में बिजनेस कर रहे हो तभी कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम आइडियली यू शुड हैव पेड फॉर हाउ मेनी इयर्स? Just 1 year, right? But you paid it for 3 years. So can I say you have paid for 2 years more? 2 years is extra. What is that 2 years का advertisement called as? वो 2,000 rupees को क्या बोलते हैं? That is called as prepaid advertisement. मतलब क्या कि आपका 3,000 जो आपने पे किया उसमें से 2,000 belongs to next 2 years, 3 years, whatever is the time period. इस साल को कितना belong करता है? तो खाली 1,000. Are you able to make that out? इस साल का खाली 1 है, बाकी 2,000 is prepaid. 2,000 has been paid extra, that is prepaid. तो क्या वो ये साल का expense है? Ask yourself. No. So what are you supposed to do? Prepaid expense. Plus करना है कि minus कर देना? 2 years minus. Minus कर देने का. Remove it from advertisement. Minus from advertisement. And what is the second effect? Prepaid expense का second effect? Asset. Assets. Why assets? ये आपको कब काम आएगा ये prepaid advertisement? Next When it will be next year. Next year काम आएगा, next to next year काम आएगा, जब भी काम आए. Okay? जब आप यूज करोगे वो एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट तब तक काम आएगा. ये प्रैक्टिकली कैसे हुआ? आपने एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी अपॉइंट की अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करने के लिए. यू नो एड एजेंसीज, राइट? एड एजेंसीज. आपने बिजनेस में एड एजेंसी अपॉइंट की और उसके साथ आपने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और 3 इयर्स का 3,000 रुपीज पे कर दिया. फॉर योर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इज जस्ट 1,000, बट यू पेड इट फॉर 3 years. So should you show 3,000 as your current year's expense? No. Why you can't? Because you will be using the benefits for 3 years. 3 साल तक आप एड्स दिखाते रहेंगे. 3 साल तक अगर आप एड्स दिखाते रहेंगे तो 3 साल तक एड्स देख देख के कस्टमर्स आते रहेंगे. कस्टमर्स आते रहेंगे तो 3 साल तक सेल्स भी होते रहेंगे. तो 3 साल तक इनकम्स भी होती रहेंगी. अगर इनकम्स 3 साल के ऊपर हो रही हैं तो एक्सपेंसेस को भी 3 साल के ऊपर दिखाओ तो ही मैचिंग फॉलो होगा आपका. बात समझ में आ रही है? तो इस साल में कितना एक्सपेंस दिखाना है? सिर्फ एक साल, just 1 year. So out of 3 years only 1 year is this year, बाकी 2 years prepaid. You got that? So 2,000 rupees is called as prepaid advertisement. What are the two effects of that 2,000 rupees? Again, will you add it to advertisement or will you subtract?
subtract. So 3 minus 2, it will become 1000 in your P&L account. P&L में outer column में या trading में outer column में वही expense दिखना चाहिए जो current year को belong करता है. Are you understanding this concept? एक बार ये concept बैठ गया ना, फिर कोई भी outstanding prepaid आपको अटकाएगा नहीं. प्रीपेड का मतलब एक्स्ट्रा पे क्या निकाल दो, आउटस्टैंडिंग का मतलब ये साल को बिलोंग कर रहा है, ऐड करो. ओके, एंड सेकंड इफेक्ट ऑफ प्रीपेड इज एसेट्स. होप ऑल ऑफ यू गॉट दैट. सो दिस इज कॉल्ड एज अ हिडन एडजस्टमेंट. व्हाई हिडन? क्योंकि इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट के जैसे नीचे नहीं दिया है, स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं दिया है, ट्रायल बैलेंस में बैठा हुआ है. कैन यू सी दैट? तो ट्रायल बैलेंस में ऐसा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया है. ओके, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन या तो टाइम पीरियड रिलेटेड हो सकता है या फिर कोई रेट परसेंटेज रिलेटेड हो सकता है. हम लोग डिटेल देखेंगे आगे, परसेंटेज रेट वाली भी आएंगी. तो ऐसा कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है मंथ्स का, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 15 मंथ्स, 3 इयर्स, तो इट बिकम्स अ हिडन एडजस्टमेंट. उसका ऐसा एक वर्किंग नोट बनाना है. ये दिख रहा है, मैंने आपको नीचे बना के दिखाया है. मेक अ वर्किंग नोट फॉर दैट हिडन एडजस्टमेंट. ओके, hidden adjustments are basically two types, either period related or percentage related. या period related है या तो फिर percentage related है. ठीक है, तो period related है तो कैसा आएगा? अभी हमने किया एडवर्टाइजमेंट 3 years, कभी देगा 2 years, कभी देगा 4 years, कभी देगा 15 months, कभी देगा 10 months, कभी देगा 8 months. ये पीरियड रिलेटेड किया. परसेंटेज वाला भी आएगा आगे, वो भी करेंगे, सीखेंगे कैसे करना है. पीरियड रिलेटेड में एडवर्टाइजमेंट समझा क्या किया मैंने? 3 years का 3000, 1 year का 1000, 2000 is prepaid. Two effects of prepaid advertisement are less from advertisement and assets. Less from advertisement and assets. Is that clear? Proceed then. Further, next one. Come to the next one. Drawings. What are you supposed to do with drawings? Deduct from the Deduct capital. from the capital. Capital, first item on the liability side. First item on the liability side, that is capital, right? Then next, insurance. Where do you put insurance? P&L. P&L debit. General reserve. What are general reserves? Liability. Why liabilities? What do you mean by general reserves? What are general reserves? Trial balance करते वक्त थोड़ा सा बताया था. Does anyone remember? What are general reserves? ध्यान से सुनना सब लोग, 12th स्टैंडर्ड में भी है ये सेम कंसेप्ट. जनरल रिजर्व का मतलब होता है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. मुझे एक बात बताओ, फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट क्या करते हो? नेट प्रॉफिट जो होता है क्या करते हो उसका? कैपिटल में ऐड करते हैं. कैपिटल में ऐड करते हो ना, क्योंकि ओनर को बिलोंग कर रहा है. ये सुनो, कभी कभी ओनर को लगता है कि भैया सबका सब प्रॉफिट मुझे कैपिटल में ऐड नहीं करना चाहिए, मुझे हर साल थोड़ा प्रॉफिट अलग से रखना है मेरे नॉलेज के लिए, या फिर पूरा प्रॉफिट अलग से रखना है मेरे अंडरस्टैंडिंग, मेरे नॉलेज के लिए. कि मेरा बेस कैपिटल समझो 1 लाख रुपया है और उस पे मैंने 10,000 कमाया. आई वांट टू शो बोथ द इंफॉर्मेशन सेपरेट. So 1 lakh rupees will be in the capital and 10,000 rupees I will not add. I will show it under a separate account. That separate account is called as reserve. उसको कभी जनरल रिजर्व बोलेंगे, कभी रेवेन्यू रिजर्व का नाम आएगा. जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व फंड आएगा, कभी रिजर्व फंड, कभी दिखेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस. ये सभी चीजें they are one and the same thing. What are these? These are your profits. These are your profits. आपने कैपिटल में ऐड नहीं किया और उसी के नीचे लायबिलिटी में अलग अकाउंट में दिखा दिया. क्यों ऐसे किया? Just to make your business and your statements and your problem here more informative. More informative. तो आपको पता चले कि कैपिटल कितना है, उस पर कमाया हुआ प्रॉफिट्स कितना है. Are you getting it? So
जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रेवेन्यू रिजर्व्स, ये सभी चीजें क्या हैं? ये सभी चीजें आपके प्रॉफिट्स ही हैं। कैपिटल में ऐड नहीं किया, अलग से दिखाया हुआ है। आर यू गेटिंग इट? कैपिटल में ऐड ना करके अलग से प्रेजेंट कर दिया है बैलेंस शीट में। तो मुझे बताओ कैपिटल कहाँ दिखाते हो आप? वेयर डू यू शो Liability. कैपिटल? लायबिलिटी। तो ये सभी तरह के रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, ये भी कहाँ दिखाओगे आप? लायबिलिटी। इज दिस एक्सटर्नल लायबिलिटी या इंटरनल लायबिलिटी? Internal. इंटरनल। किसको बिलोंग कर रहे हैं ये रिजर्व्स? Owner. ओनर। तो कैपिटल में ना दिखा के हमने अलग से दिखाया। बात समझ आई है? जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व फंड, ओके, इन सब के थोड़े थोड़े बारीक डिफरेंसेस है। ये आप कंपनीज अकाउंट जब लर्न करोगे तब आ जाएंगे। बाकी ये नाम घूम फिर के एक ही नाम, एक ही चीज इंडिकेट करते हैं कि ये आपके प्रॉफिट्स है, कमाए हुए पास्ट के प्रॉफिट्स है। बात समझ में आई? जो आपने कैपिटल में न रख के अलग से दिखाया। तो इधर जनरल रिजर्व में कितना पैसा है? 25,600। मतलब ये ओनर ने ये प्रॉफिट कैपिटल में ऐड नहीं किया, अलग से दिखाया। आपको भी अलग से दिखाना है, कैपिटल के नीचे दिखाना है जनरल रिजर्व। लायबिलिटी। What type of liability? Is this internal liability or external liability? Internal. Internal liability. All of you got that? Belongs to the owner. यहां तक का आइटम्स में कोई डाउट्स किसी को? एडवर्टाइजमेंट समझा सबको? एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का 3,000 वो तो लिखना ही है, उसके ऊपर अलग से हमने एडजस्टमेंट किया प्रीपेड। वो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट का दो इफेक्ट है, लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट और एसेट्स। इज दिस क्लियर? नाउ क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट्स, two effects, unrecorded transactions. Closing stock at cost is 25,000 and market value is 30,000. Which value are you supposed to consider? The lesser one. The lesser one. The lesser one. Always the lesser one. Okay? Because we never show profits in advance. We can show losses in advance. So 25,000 is the value you will take. And what are the two effects of closing stock? इस साल के end में बच गया Trading credit asset. and assets. Right there, TC/A. Hope all of you got that. What will you do with that 30,000? What will you do with that 30,000? Higher value of closing stock. Are you supposed to record it anywhere? No. No, ignore it. Simply ignore it. Take the lesser value, 25,000. Unrecorded sales are 4,000. Remember what are the two effects of unrecorded sales? पहले तो क्या assume करोगे? Will you assume it as a cash sale or a credit sale? Always assume on credit. Credit. Always assume on credit. Very good. And what is the journal entry for that credit sale? Debtor to sales. Debtor to sale. ये आप रिकॉर्ड करना भूल गए, अनरिकॉर्डेड है। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, एडजस्टमेंट ही छोड़ देते हैं, बोलते हैं सर ये तो अनरिकॉर्डेड था। अरे बंधु, अनरिकॉर्डेड है इसीलिए तो रिकॉर्ड करना है। एवरी एडजस्टमेंट इज अनरिकॉर्डेड। ओके, अभी बोलेंगे सर अनरिकॉर्डेड था तो क्या करने का, छोड़ देने। अरे हर एक एडजस्टमेंट अनरिकॉर्डेड, एवरी एडजस्टमेंट इज अनरिकॉर्डेड। तो डेटर टू सेल या अनरिकॉर्डेड है, इसको घुसाओ फाइनल अकाउंट में, आपका काम वही है। तो कैसे घुसाओ? Add to debtor, add to sales. एड टू डेटर, एड टू सेल्स। सेल्स इनकम बढ़ जाएगा और डेटर से पैसा लेना बढ़ जाएगा। इज दिस क्लियर? ऑल ऑफ यू गॉट दैट? अनरिकॉर्डेड सेल समझ आया सबको? हाँ. एड टू सेल्स, एड टू डेटर लिख लो वहां पे, एड टू सेल, एड टू डेटर, एड टू सेल्स, एड टू डेटर। Then we have unrecorded purchase returns. It's not unrecorded purchase. It's unrecorded purchase returns. Now think about it. We will subtract from creditor and add to purchase return. Exactly. See, add to purchase return के जगह what you can do? Subtract it from the purchase. From purchase ना। अगर परचेज रिकॉर्ड करना होता तो मैं क्या करता, ऐड टू परचेज, ऐड टू क्रेडिटर करता। परचेज का खर्चा बढ़ गया, क्रेडिटर को पैसा देने का बढ़ गया, वो होता अनरिकॉर्डेड परचेज। ये क्या अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न्स है, तो उसको घुसाओ फाइनल अकाउंट में। परचेज रिटर्न्स में ऐड करने के बदले व्हाट यू कैन डू, instead of adding to purchase returns, what you can do? Minus from purchase. Minus from purchase. It is one and the same thing.
रिटर्न बढ़ेगा तो परचेज घटेगा, है कि नहीं? तो माइनस फ्रॉम परचेज कर दो. एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? क्रेडिटर में ऐड करना है कि माइनस करना है? माइनस. पक्का? क्यों माइनस करना है? जब आप रिटर्न करते हो तभी क्रेडिटर का उधार बढ़ता है कि कम हो जाता है? कम हो जाता है. खरीदते हो, when you buy more goods your creditors will increase, but when you return the goods your creditors will decrease. Yes or no? So it's purely logical. एडजस्टमेंट की कोई लिस्ट नहीं है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी. ये 15-20 तो आपको यहाँ पर है, बाकी कोई एडजस्टमेंट जैसी कोई लिस्ट नहीं होती है कि यही एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट मतलब क्या? कोई भी अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, कोई भी अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन जो फाइनल अकाउंट स्टेज पे एंटर करते हैं उसको एडजस्टमेंट बोला जाता है. बात समझ आए? कोई भी एंट्री दे सकते हैं आप, आपको दिमाग यूज करना है. यहाँ पे परचेज रिटर्न है तो लेस फ्रॉम परचेज, लेस फ्रॉम क्रेडिटर. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? पक्का? प्रिया गांधी को समझा? So less from purchase, less from creditors, right there. Less from purchase, less from creditors. Yeah. Now let's proceed. आगे जाते हैं. Provide for depreciation on machinery at 10%. क्या करना है? Depreciation on machinery. Lifetime adjustment. Okay, sorry, I missed one. Goods of 3,000 are taken away by Kapil for personal use. पहले तो मुझे journal entry बोलो. Goods withdrawn for personal use. Kapil तो owner है. Drawings to Drawings purchase. Drawings to goods withdrawn for personal use, right? Drawings to goods withdrawn. तो अब सोचो ड्रॉइंग्स क्या करना है? हाउ विल यू पुट इट इन द फाइनल? Subtract from capital. Subtract from capital. सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल. एंड क्या विड्रॉ किया? गुड्स की कैश. Goods. गुड्स मतलब बिजनेस में से गुड्स कम हुआ है, तो कहाँ से निकालना है? ये गुड्स कहाँ पड़े हुए हैं आपके पूरे? क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक में से भी निकाल सकते हो, बट ये ड्रॉइंग्स क्या एंड ऑफ द ईयर में हुआ है? आफ्टर क्लोजिंग स्टॉक नहीं. कब हुआ है? इन बिटवीन द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर हुआ है. आप रिकॉर्ड करना भूल गए, तो वो कहाँ पड़ा है? वो ड्रॉइंग्स, वो गुड्स कहाँ पड़ा हुआ? Purchase. परचेज में पड़ा हुआ है, तो Correct. परचेज में से निकालो. परचेज में से माइनस करने के बदले कहाँ दिखा? Trading credit. परचेज में से माइनस करने के बदले Trading ट्रेडिंग क्रेडिट. credit. याद आया? गुड्स कहीं पर भी जा रहा है अपार्ट फ्रॉम परचेज में. कौन सा परचेज दिखता है? याद है? बोला था लास्ट लेक्चर. परचेज में कौन सा परचेज दिखाते? Only Purchase those साल के वक्त purchases किया हुआ. that you have sold. Only those purchases that you have sold. Only those goods that you have sold. जो सेल्स हुए हैं वही गुड्स परचेज में दिखते हैं. उसको छोड़ के सब रिमूव कर देना है. लॉस्ट वाले गुड्स निकाल दो, एडवर्टाइजमेंट वाले गुड्स निकाल दो, विड्रॉन वाले गुड्स निकाल दो, सब निकाल देना. खाली नॉर्मल परचेज जो गुड्स बेचा हुआ है, क्योंकि तो ही आपकी मैचिंग कंसिस्टेंटली फॉलो होगी और आप ग्रॉस प्रॉफिट को कंपेयर कर पाओगे. ग्रॉस प्रॉफिट्स को कंपेयर कर पाओगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? So withdrawn for personal use. Have you sold these goods? No. बेचा तो है नहीं, तो परचेज में दिखना नहीं चाहिए, तो हटाओ. बट विल यू शो इट एज अ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम परचेज और विल यू शो इट ऑन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. अगेन व्हाई? प्रेजेंटेशन 11th स्टैंडर्ड. आगे जाके हायर स्टैंडर्ड में परचेज से माइनस ही करना है. ओके. सो लेस फ्रॉम परचेज की जगह ट्रेडिंग क्रेडिट एंड ड्रॉइंग्स, क्योंकि गुड्स विड्रॉ हो गया, घर पे चला गया, बेचा है ही नहीं तुमने. व्हाट नेक्स्ट वी हैव इज provide for depreciation on machinery at the rate of 10%. Depreciation on machinery. Riya Palan, can you tell me the two effects of depreciation? Asset minus and trading account, it will be on the debit side. Depreciation. No, profit and loss account, it will be on the debit side. Profit and loss पूरा चैप्टर किया है. by P&L, by P&L, by P&L. Depreciation P&L debit. And assets में प्लस की माइनस? Minus, because the value of the asset is going down. माइनस, क्योंकि एसेट का प्राइस कम हो गया, एसेट वैल्यू कम हो गया, तो माइनस फ्रॉम एसेट एंड P&L डेबिट. सेम इज फॉर बिल्डिंग, लेस फ्रॉम एसेट एंड P&L डेबिट. होप ऑल ऑफ यू गॉट दैट. Then we have outstanding expenses. Rent 500. Virali, outstanding expense, outstanding rent. What are the two effects? Add to liabilities.
and add to rent. add to rent. लाइबिलिटी में कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दिखा सकते हो. ऐड टू रेंट एंड लाइबिलिटी, ऐड टू रेंट एंड लाइबिलिटी. ओके, ऐड टू रेंट एंड लाइबिलिटी. नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज, सी ध्यान से पढ़ो क्या दिया है. अच्छा, बिफोर दैट निशांत, रुचि, पलक and Ishita. One more time I find your video off, you'll be out. Even for a second. Okay, even Rutva and Pooja. Your video is off even for 1 second, you'll be out. Well, adjustment number F. Adjustment number F. Provide reserve for doubtful debts at the rate of 5% on debtors. Provide reserve for doubtful debts at the rate of 5% on debtors. What are these two items? What are these two? What is this item? Sorry. Reserve for 5% on doubtful debt. RDD. Why? देखो, reserve for doubtful debt तो crack हो जाता है, RDD है, short form. Which RDD? Is it old RDD or it is new RDD? New RDD. It's new RDD. How do you identify it's new RDD? Because it's in the adjustment. Because it's in the adjustment. What do you mean by this new RDD? न्यू आरडीडी का मतलब है आपको लगता है कि शायद नेक्स्ट ईयर 5% डेटर पैसा नहीं देंगे. कितने? 5% डेटर्स आपको पैसा नहीं देंगे. तो आपने यही साल आपका लॉस दिखा दिया, यही साल वो अमाउंट लॉस के फॉर्म में दिखा दिया और वो पैसा कहां ट्रांसफर करके रख दिया? तो एनआरडीडी अकाउंट. अपना ही जेब है, आपका प्रॉफिट है, वन पॉकेट से दूसरे पॉकेट में डाल दिया. भला ये लॉस होने वाला है. समझो, आई गिव यू एन एग्जांपल. आपने से पूजन ने निशांत को 100 रुपीज दिए थे पिक्चर देखने के लिए. दोनों पिक्चर देखने गए, निशांत के पास 100 रुपीज नहीं थे, पूजन ने उसको 100 रुपीज दे दिए. ओके, अब पूजन को हर महीने पॉकेट मनी मिलती है, समझो 500 रुपीज. उसमें से 100 रुपीज उसने निशांत को दे दी. ठीक है, बाकी 400 उसने स्पेंड कर दिया पूजन ने. अब नेक्स्ट मंथ हो गया, सेकेंड मंथ आ गया, पूजन को वापस 500 की पॉकेट मनी मिली. पूजन ने निशांत को बोला यार वो 600 रुपीज. निशांत ने बोला नेक्स्ट मंथ देता हूं. पूजन बोला ठीक है. थर्ड मंथ आया, वापस पूजन को पॉकेट मनी मिल रही है, उसकी 500 वो स्पेंड कर रहा है. उसने निशांत को बोला यार मेरा 100 रुपीज. निशांत बोला चल नेक्स्ट मंथ देता हूं. अब पूजन को लगा यार ये लफड़े वाला काम, निशांत मेरे को पैसे देगा नहीं, ऐसा लगता है. निशांत है ना, ये खा गया, ये 100 रुपए खा गया. तो पूजन क्या करेगा? पूजन अभी नेक्स्ट मंथ जब उसको पॉकेट मनी मिलेगी 500, तो वो क्या करेगा? पूरे के पूरे 500 है ना स्पेंड नहीं करेगा, पूरे के पूरे 500 स्पेंड नहीं करेगा. उसमें से 100 रुपीज साइड पे रखेगा. 100 रुपीज साइड पे रखेगा. क्यों साइड पे रखेगा? क्योंकि उसको लगता है कि शायद निशांत पैसे नहीं देगा. अब ऐसा क्यों किया पूजन ने? क्योंकि पूजन को अपने डैडी को हिसाब देना पड़ता है कि कहां कहां उसने स्पेंड किए हैं पैसे. तो अगर उसने पूरे स्पेंड कर दिए 500 और डैडी हर महीने पूछ रहे हैं कि वो 100 रुपए कहाँ है, वो 100 रुपए कहाँ है, वो 100 रुपए कहाँ है, वो 100 रुपए कहाँ है. पूजन बोल रहा है मेरे पास पड़े हुए हैं, मेरे पास पड़े हुए, मेरे पास पड़े हुए, लेकिन एक्चुअली वो पैसे उसने निशांत को दे दिए थे 100 रुपए. अब डैडी हर महीने हिसाब मांग रहे हैं, पूजन बोल रहा है मेरे पास पड़े हुए, मेरे पास पड़े हुए. पूजन बोला ये बहाना लंबे टाइम तक चलेगा नहीं, डैडी पूछ लेंगे. तो थर्ड मंथ हो गया, फोर्थ मंथ हो गया, पूजन क्या करेगा? अभी 100 रुपया साइड पे रख लेगा. 100 रुपया साइड पे रख लेगा और अपने पॉकेट मनी से कितना स्पेंड करेगा? तो सिर्फ 400, सिर्फ 400 रुपीज स्पेंड करेगा. 100 रुपीज साइड पे रख देगा. फिर डैडी ने पूछा अचानक से आगे, अरे किधर है वो 100 रुपया बताओ. पूजन बताएगा ये देखो डैडी 100 रुपये का नोट मेरे पास पड़ा हो. अब ये 100 रुपये का नोट एक्चुअली क्या हुआ था? उसने निशांत को दिया था और वो पैसे क्या हुए थे? डिफॉल्ट हो गए थे. बराबर है. तो पूजन ने फिर भी क्या किया? वो 100 रुपए साइड पे रखे और बता दिए ये देखो 100 रुपए पड़े हुए, 100 रुपए पड़े हुए. डैडी ने बोला ठीक है चलो
ठीक है, चलो 100 रुपए पड़े हुए, वेरी गुड। अभी पूजन बिंदास उसको खर्च कर लेगा, अभी पूजन को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि डैडी ने देख लिया है नोट, डैडी ने देख लिया है 100 रुपए पड़े हुए, अभी स्पेंड करो बिंदास। नाउ वी कैन स्पेंड दैट 100 रुपीज, बट अल्टीमेटली was पूजन able to spend that 100 if you check it from the beginning? क्या सभी पैसों, जितने भी पैसे पूजन को मिले उसमें से 100 रुपीज क्या उसने स्पेंड किए थे कि वो निशांत को दे दिए? निशांत को दे दिए थे। तो समझो उसको 4 महीने की पॉकेट मनी 2000 रुपीज मिली थी, उसमें से क्या पूरे 2000 पूजन ने अपने बेनिफिट के लिए स्पेंड किए थे? नहीं, उसमें से 100 रुपीज का क्या हो गया था? बैड डेट हो गया था, वो निशांत को चले गए। आर यू गेटिंग दैट? तो खुद ने स्पेंड नहीं किया, अल्टीमेटली खुद ने कितने स्पेंड किए? 1900। लेकिन उसने कैसे स्पेंड किए? पहले उसने 100 रुपए अलग से रखे, डैडी को बताए ये 100 रुपए पड़े हुए हैं, फिर बैड डेट के हिसाब से उसने उसको समझ लिया कि चलो ये निशांत का पैसा गया, ये आने वाला नहीं है, और आपने ये स्पेंड कर दिया। तो अब पूजन श्योर हो जाएगा, अब जब भी पूजन निशांत को पैसे देगा 100 रुपीज, सपोज फ्यूचर में दिया तो, पहले तो देगा ही नहीं, अगर दिया तो निशांत वापस आया, निशांत ने वापस बोला मुझे पिक्चर टिकट के 100 रुपए चाहिए, और पूजन ने सपोज उसको 100 रुपीज दिए, तो वो क्या करेगा? क्या वो बाकी का 400 पूरा स्पेंड कर देगा कि उसमें से 100 रुपए साइड पे, 100 साइड पे रखेगा? क्यों? टू शो टू पप्पा कि भैया ये मेरे पास पड़े हुए हैं, ये हिसाब देने के लिए पप्पा कभी भी हिसाब मांग सकते हैं। तो ऐसे करके कंपनी भी यही करती है, बैंक्स भी यही करते हैं, जितने भी लेंडर्स होते हैं ना, लेंडर्स का मतलब क्या? जो लोग दूसरे को पैसा लेंड करते हैं, उधार देते हैं। अगर मैंने किसी डेटर को 5000 रुपीज का सेल किया है और मुझे लगता है कि वो डेटर 500 रुपीज नहीं देगा, तो वो क्या होने वाला है? बैड होने वाला। बैड होने वाला तो मेरा नुकसान है कि फायदा? लॉस है, दैट इज माई लॉस। तो फॉर दैट लॉस आई विल क्रिएट एन एनआरडीडी, फॉर दैट लॉस आई विल क्रिएट एन एनआरडीडी। क्रिएट करने का एंट्री क्या होता है? एनआरडीडी क्रिएट करने का एंट्री होता है पीएनएल टू एनआरडीडी। पीएनएल क्या है? आपका रिजर्व है, अभी अभी मैंने समझाया रिजर्व मतलब आपका प्रॉफिट। आरडीडी क्या है? आप एक लायबिलिटी बना रहे हो, मतलब रिजर्व को कम कर रहे हो और लायबिलिटी को बढ़ा रहे हो, रिजर्व को कम कर रहे हो, लायबिलिटी बढ़ा रहे हो। अब ऐसे सोच रहे हो कि ये पैसे तो गए, फ्यूचर में जाने वाले। तो पीएनएल अपने प्रॉफिट्स को कम करोगे और एक लायबिलिटी क्रिएट कर दोगे। कितने की लायबिलिटी क्रिएट करोगे? जितने का बैड डेट्स आपको लगता है। फिर जब बैड डेट्स होगा तब एंट्री क्या होती है? नॉर्मली बैड डेट टू डेटर होती है, ये तो आपको मालूम है, बैड डेट टू डेटर। एंड बैड डेट जो एक्सपेंस होता है वो पीएनएल डेबिट में चला जाता है नॉर्मली, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस गो टू पीएनएल डेबिट एट द ईयर एंड। बैड डेट शुड आल्सो गो टू पीएनएल डेबिट। बट जब आपने आरडीडी क्रिएट किया है तब ये बैड डेट पीएनएल में नहीं जाएगा, ये आरडीडी में चला जाएगा, ये फर्क पड़ जाता है। तो ले दे के हुआ क्या? ले दे के कुछ नहीं हुआ, ये आरडीडी कट हो गया, ये बैड डेट कट हो गया, नेट एंट्री अभी भी सेम ही है, पीएनएल टू डेटर। आपका लॉस जा ही रहा है पीएनएल में, तो ऐसा मत समझना कि कुछ मैजिक हुआ है, कुछ मैजिक नहीं हुआ है, खाली लॉस फ्यूचर में जाने के बदले पहले ही चला गया। आज ही आपने लॉस दिखा के एनआरडीडी क्रिएट किया और फ्यूचर में जब बैड डेट्स हुआ तब वो एनआरडीडी से एडजस्ट किया, पीएनएल से राइट ऑफ नहीं किया, पीएनएल में ट्रांसफर नहीं किया, एनआरडीडी में ट्रांसफर कर दिया, ये अलग हुआ। तो in our example, in the question in front of you, check and tell me, bad debts दिख रहा है आपको ट्रायल बैलेंस में? Do you see any bad debts in the trial balance? कुछ bad debts दिख रहा है आपको? It is RDD, but no bad debts. No bad debts. Can you see bad debts in the trial balance? No bad debts. But you can see RDD. How much is RDD?
800. 800 का आरडीडी है। ये 800 का आरडीडी कौन सा आरडीडी होगा? Old. ओल्ड आरडीडी। इस साल का एनआरडीडी बिकम्स लास्ट, इस साल का एनआरडीडी बिकम्स नेक्स्ट ईयर का ओआरडीडी। वैसे लास्ट ईयर का एनआरडीडी बिकम्स दिस ईयर का ओआरडीडी। तो लास्ट ईयर आपने ऑलरेडी कितने का लॉस करके दिखा दिया है? 800 का। पीएनएल टू एनआरडीडी, आपने पीएनएल को डेबिट किया है, एनआरडीडी क्रिएट करके दिखा दिया 800 का। अब आपको लगा कि ये साल शायद बैड डेट्स होगा 800 का, लेकिन देखो चेक करो ट्रायल बैलेंस, कुछ बैड डेट्स हुआ? कुछ हुआ ही नहीं। अगर कुछ बैड डेट होता तो वो कहां ट्रांसफर होता? पीएनएल में ट्रांसफर होता कि आरडीडी में ट्रांसफर होता? आरडीडी में। आरडीडी में ट्रांसफर। तो वो 800 का आरडीडी के सामने 800 का बैड डेट नलिफाई होता है, पीएनएल में कुछ नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आपने 800 का लॉस दिखा दिया। तो अभी ये साल कोई बैड डेट हुआ ही नहीं, तो कहना है से आपके पैसे ऐसे ही पड़े हुए हैं 800 रुपए। यस और नो? तो कहना है से लास्ट ईयर 800 का लॉस हुआ था, लेकिन ये साल 800 का गेन हो गया। बराबर है ना? गेन हो गया ना? कैसे गेन हो गया? 800 के 800 बच गए, तो बचे हुए पैसे आप क्या करते हो? वापस पीएनएल में डाल देते हो, यू पुट इट बैक टू पीएनएल। तो जब पीएनएल से आरडीडी निकाला था तब एंट्री क्या मारी थी आपने? पीएनएल टू एनआरडीडी लास्ट ईयर 800। अब ये साल अगर बैड डेट होता तो एंट्री होती ये एनआरडीडी बिकम्स ओआरडीडी टू बैड डेट, ओआरडीडी टू बैड डेट, अगर बैड डेट हुआ होता तो। लेकिन बैड डेट तो हुआ ही नहीं, तो ये चला जाएगा वापस पीएनएल में, ये चला जाएगा वापस पीएनएल। तो पीएनएल में से निकाला 800, वापस पीएनएल में डाल दिया 800। अभी जरूरत नहीं है तो डाल दिया, तो वापस फायदा हो गया, 800 रुपए का फायदा हो गया। फिर उसके बाद नीचे पढ़ो एडजस्टमेंट में क्या दिया? यू क्रिएटेड एनआरडीडी एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। कैन यू सी दैट? ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस एनआरडीडी? New reserve. ड्यू रिजर्व मतलब कौन सा है? ये लास्ट ईयर वाला है कि करंट ईयर का है? Current year. करंट ईयर में वापस क्रिएट किया आपने एनआरडीडी, तो वापस क्या एंट्री करोगे? पीएनएल टू एनआरडीडी। अभी ये साल कितने का क्रिएट किया? 5% ऑफ डेटर्स। तो डेटर्स जो भी है समझो, डेटर्स आर 50,000, 50,000 का 5% इज 2,500। तो पीएनएल टू आरडीडी मतलब वापस आपने लॉस दिखाया और अलग से रिजर्व क्रिएट किया एनआरडी। अगेन यू शोड अ लॉस एंड यू क्रिएटेड एन एनआरडी। तो ये एनआरडीडी काय के लिए क्रिएट किया है? करंट ईयर के बैड डेट्स के लिए कि नेक्स्ट ईयर के बैड डेट्स? करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर के बैड डेट्स के लिए। करंट ईयर के लिए क्या कब क्रिएट किया होगा? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में क्रिएट किया। वो लास्ट ईयर का एनआरडीडी बिकम्स दिस ईयर का ओआरडीडी। तो इस साल तो कुछ बैड डेट हुआ ही नहीं, तो ओआरडीडी चला गया पीएनएल में, तो 800 का फायदा, और वापस आपने क्रिएट किया एनआरडीडी 2500 का, तो 2500 का नुकसान। तो आपको समझ में आ रहा है नेट क्या हो रहा है? नेट 800 का फायदा हुआ और 2500 का नुकसान हुआ, तो नेट नुकसान कितना हुआ? व्हाट इज द नेट लॉस? 1700. 1700। हाउ इज योर नेट लॉस 1700? 800 रुपया जो बच गया था उसको डाल दिया वापस, और नया लॉस कितने का हुआ? 2500। तो नेट लॉस इज 1700. हाउ इज योर नेट लॉस 1700? 800 का गेन एंड 2500 का लॉस। डिड यू गेट दैट? यही But चीज this हम लोग 2,500 is assumed right now. assumed. That is assumed. NRDD is the assumed value 2500. तो 2500 का लॉस, 800 का गेन, नेट लॉस 1700। यही चीज हम लोग फॉर्मूला में दिखाते हैं। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? ये है फॉर्मूला। इन योर पीएनएल डेबिट दिस इज द फॉर्मूला। 2BD प्लस FBD प्लस NRDD माइनस ORDD। अब मुझे जरा सोच के बताओ, एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में BD है, बैड डेट है कुछ? नहीं, नहीं।
तो ये साल कोई बैड डेट नहीं हुआ. FBD है for the bad debts. This question it will go on the credit side, right? Nil. 1 minute. Do you have any ORDD in the sum? No. अरे यार, we have ORDD. ORDD है ना 800 का. Or do you have any NRDD in the sum? Yes. I'm assuming that is 2,500. I'm assuming that is 2,500. So 2,500 is NRDD, 800 रुपया ORDD. What is my net amount? 1,700. अभी हमने डिस्कस किया, वो अपना नेट लॉस था. 800 रुपए लास्ट ईयर के बच गए, वो गेन था. और ये साल ऑल 2,500 का लॉस दिखाया. अभी समझो नेक्स्ट ईयर वापस कुछ भी बैड डेट नहीं हुआ, तो ये 2,500 क्या हो जाएगा नेक्स्ट ईयर का? ORDD. और बैड डेट हुआ ही नहीं, तो पूरा का पूरा 2,500 का क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा. वापस नया रिजर्व क्रिएट करोगे NRDD, दैट विल बी द लॉस. ओके. एंड व्हाट इफ लास्ट ईयर आपने 800 का रिजर्व क्रिएट किया था, यहाँ पे दिख रहा है ये ORDD वाज 800. एंड व्हाट इफ ये साल 800 का बैड डेट हुआ होता, ये साल 800 का बैड डेट हुआ होता, तो फिर आपका नेट लॉस कितना होता? 2,500. क्यों 2,500 का नेट लॉस हुआ? क्योंकि 800 का बैड डेट हमने प्रेडिक्ट किया था और वो हुआ भी. हाँ, तो वो बैड डेट कहाँ से ट्रांसफर, कहाँ से राइट ऑफ हुआ होगा? वाया ORDD से राइट ऑफ हुआ होगा. इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग इट टू PNL, आपने ORDD में ट्रांसफर कर दिया. तो ORDD में जो 800 रखा था वो साफ हो गया, 0 हो गया. और न्यू NRDD का पूरा 2,500 का लॉस हो गया आपका. आर यू गेटिंग दैट? व्हाट इफ आपने प्रेडिक्ट किया था 800 और बैड डेट हो गया 1,000, अब क्या होगा? आपने ORDD रखा था 800 और बैड डेट हो गया 1,000, अब क्या होगा? अब टोटल लॉस कितना होगा आपका? What will be our total loss for this Plus year? level 200 कुछ है ना ORDD में, मतलब 200 का ज्यादा लॉस हुआ है. ज्यादा का लॉस हो गया, तो वो बैड डेट तो जाएगा ही PNL में, ऊपर वाला 200 रुपया. आर यू गेटिंग दैट? क्योंकि ORDD था 800, रिजर्व था 800, रिजर्व था 800 और बैड डेट हो गया 1000. आपको लग रहा था 800 नहीं, 800 का बैड डेट होगा, 1000 का हो गया. तो एक्स्ट्रा लॉस कितना हुआ आपको? 200. और ये साल नया रिजर्व वापस क्रिएट किया 2,500 नेक्स्ट ईयर के लिए, सो वो भी लॉस चिपक जाएगा. सो टोटल लॉस कितना हुआ आपका? 2,700 रुपीज. आर यू गेटिंग इट? How? How 2,700? Last year, how much reserve you had kept? 800. But we had a 800. loss of 1,000. But now bad debts are 1,000. So how much will you be able to write off from RDD? दिए एंट्री करते हो ना RDD to bad debt. ये रहा. जब भी अभी बैड डेट होगा तब RDD to bad debt करना है, बैड डेट टू डेटर और फिर RDD to bad debt. But RDD to bad debt can be done of only 800 because RDD was only 800. बाकी का 200 कहाँ जाएगा? बाकी का 200 PNL में जाएगा, PNL to bad debt. क्योंकि टोटल लॉस इज 1,000, राइट? Entire 1,000 won't be transferred to PNL because there is already RD. जब भी RDD होता है तभी RDD पूरा अब्सॉर्ब कर लेता है जितना कर सकता है. ऊपर का लॉस गोज टू PNL, ऊपर का 200 गोज टू PNL. तो वो एक्स्ट्रा लॉस हुआ 200 का आपका. वो समझ में आया बात? क्योंकि बैड डेट ज्यादा होगा 1,000 के, तो 200 का एक्स्ट्रा लॉस. और बाकी तो NRDD जो नेक्स्ट ईयर का प्रेडिक्ट किया आपने 2,500, वो लॉस अभी दिखा दिया 2,500. तो टोटल लॉस फॉर दिस ईयर इज 2,700. अभी ये साल आपने 2,500 का क्रिएट किया है और नेक्स्ट ईयर बैड डेट हो गया 3,000. सोचो क्या होगा. ये साल 2,500 का NRDD है और नेक्स्ट ईयर बैड डेट्स हो गए 3,000. तो फिर एक्स्ट्रा लॉस कितना है? 300. 500. 2,500 का NRDD है ना. NRDD is 2,500 and next year bad debts हो गए 3,000. So what is our extra loss? 500. Extra loss is only 500 rupees. Okay.
अगर ज्यादा बैड डेट्स हुए तो इन फ्यूचर। तो एनआरडीडी ओआरडीडी को है ना, लॉजिक क्या है, ये साल का एनआरडीडी नेक्स्ट ईयर का ओआरडीडी, वैसे ही लास्ट ईयर का एनआरडीडी बिकम्स दिस ईयर का ओआरडीडी। जो भी ओआरडीडी होता है ना, वो आपका लॉस को कम करता है, बैड डेट्स को कम करता है, सिंपल। तो उसको फॉर्मूला में से माइनस कर देने का, 2BD प्लस FBD प्लस NRDD माइनस ORDD। तीन चीजें आपके लॉस को बढ़ाएंगी, बैड डेट बढ़ाएगा, FBD बढ़ाएगा, NRDD बढ़ाएगा। ORDD आपके लॉस को हमेशा कम करेगा। ORDD विल रिड्यूस योर लॉस, हमेशा कम करेगा, माइनस। ओके, P&L डेबिट में से माइनस। एंड ये साल का NRDD विल बिकम नेक्स्ट ईयर का व्हाट, ORDD। तो वो नेक्स्ट ईयर के लॉस को कम करे। ये साल का NRDD नेक्स्ट ईयर के लॉस को कम करेगा, वापस नेक्स्ट ईयर का NRDD उसके नेक्स्ट ईयर के लॉस को कम करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस साइकिल? जब NRDD क्रिएट करोगे तब लॉस, फिर नेक्स्ट ईयर ORDD बन के आपके लॉस को कम करेगा। जब क्रिएट करोगे तभी लॉस, फिर नेक्स्ट ईयर लॉस को कम करेगा। दिस इज हाउ द साइकिल कंटिन्यूज। So in this problem, you have just two items. One is ORDD and one is NRDD. NRDD is given to be 5%. What are the two effects of NRDD? One is in the formula. We saw that just now. And what is NRDD for the business? It's a liability. But do you show it as a liability? No. You subtract it from debtors. So right there, minus from debtors, minus from debtors. Minus from debtor. Just for presentation, you subtract it from debtors and keep. Then you have uninsured goods of 4,000 lost in transit. What are the two effects of uninsured goods lost in transit? Subtract from purchases एक को goods गया तो less from purchase, उसके and जगह less from asset. trading credit and Less from asset. P&L debit. Correct. Why less from asset? कौन सा asset गया है? हाँ? It will be subtracted from Purchase. वही goods के लिए less from purchase के जगह trading credit. And what is the second effect? P&L debit. ओके, डायरेक्ट अपना परचेज गुड्स कम हो गया, परचेज को कम कर दो और चला गया लॉस में, तो P&L अकाउंट डेबिट साइड, दैट्स योर लॉस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। गॉट दैट ऑल ऑफ यू? गिव द डॉट्स, फटाफट डॉट्स दे दो सब लोग। पुट अ डॉट ऑन सेल, पुट अ डॉट ऑन डेटर, पुट अ डॉट ऑन परचेज, पुट अ डॉट ऑन क्रेडिटर, वन डॉट ऑन सेल, one dot on purchase, one dot on debtor, one dot on creditor. Purchase, sale, debtor, creditor, one dot each. machinery and building. Machinery and building, one dot each. Rent पे एक dot. Debtors पे एक dot for RDD. Debtors पे one dot for RDD. Let's start. पहले few items you write and keep. सबसे पहले तो to opening stock, to purchases less returns, buy sales less returns, and capital less drawings. Okay, now let's begin. Start, do it along with me. Opening stock 58,000. Tell me, is there any dot? Is there any dot on opening stock? No dot. So outer column जाएगा opening stock 58,000. Wages and salaries. Where do you put wages and salaries? Wages and salaries. That is trading debit. Is there any dot on wages and salaries? Check. है कुछ? No dot. अच्छा, one more dot on advertisement. Hidden adjustment का एक last dot advertisement पे भी डाल. One more dot on advertisement. Okay. Wages and salaries. Then we have carriage.
तो कैरेज जाएगा आपका ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज इज 2500. परचेज एंड सेल्स, परचेज किधर जाएगा? परचेज जाएगा आपका ट्रेडिंग डेबिट. Or for the unrecorded purchase return, you will not show separately. यू कैन शो सेपरेटली. इधर एक लाइन में थोड़ा फिट करना पड़ेगा. रिटर्न्स है ना, उसके नीचे लिखना पड़ेगा. एक्चुअली एक लाइन छोड़ना था बट ठीक है, अभी नहीं छोड़ा है तो इधर लेस अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न्स फिट करना पड़ेगा. ओके, तो परचेज पहले लिख दो. इनर कॉलम 63,000, परचेज इन द इनर कॉलम 63,000, और जिधर छोटा सा जगह है उधर फिट कर लो रिटर्न्स और वेजेस के बीच में लेस अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न्स. देयर इज एन एडजस्टमेंट ऑन परचेज, देयर इज अ डॉट ऑन परचेज. व्हाट इज दैट डॉट? अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न्स का क्या डॉट है देखो वहां. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न्स? 3,000. वो सब ट्रैक करके दिखा रहे हैं. ओके, तो पहले क्लिक हुआ है तो यू लीव अ लाइन, अगर नहीं छोड़ा है तो फिर उधर फिट कर लो बीच में. ओके, देन सेल्स, वेयर डू यू पुट सेल्स? सेल्स जाएगा. Credit side and column. इज देयर एनी डॉट ऑन सेल्स? है कुछ? नो डॉट, राइट? सो इनर कॉलम, व्हाई इनर कॉलम? बिकॉज देयर आर रिटर्न्स. एक डॉट भी है ना आई थिंक सेल्स पे. व्हाट इज अ डॉट? Unrecorded sales. What are you supposed to do with unrecorded sales? Add it. Add unrecorded sales. Add unrecorded sales कितना है तो 4,000. Add unrecorded sales, that is 4,000. Then we have bills receivable. Where do you put bills receivable? The assets. Assets, bills receivable. Is there any dot on bills receivable? No dot. Bills payable are liabilities. Bills payable are liabilities. Again, no dot. So outer column 1,26,000. Sir, वो 600 और 1,000. अरे एक मिनट, I took the purchase and sale count. 600 and 1,000. 600 and 1,000. Then rent. Where do you put rent? सर पूजन का नेटवर्क इश्यू था, उसको वापस लो ना मीटिंग. He hasn't entered. अच्छा रुको बोलता हूँ. Rent कहाँ जाएगा? Where do you put rent? P&L debit. P&L debit. So to rent is P&L debit. But I think there is a dot on rent, right? What is a dot on rent? Outstanding. Outstanding rent. So add outstanding rent. How much is outstanding rent? 500. Outstanding rent is 500. 500 rupees. This becomes 4,000. Expense belongs to this year. Got that? Add outstanding expense dot था. फिर क्या है? RDD. तो RDD कभी भी दिख जाए या बैड डेट का कोई भी आइटम दिख जाए, पूरा फॉर्मूला लिख देने का. Every problem, write down the entire formula. What is that formula? 2BD plus FBD plus NRDD minus ORDD. ये पूरा फॉर्मूला लिख के रख देने का. ओके, एवरी प्रॉब्लम. ये होने ही वाला एडजस्टमेंट हर एक प्रॉब्लम में आएगा. फिर जो आइटम्स है वो फिल करना, जो नहीं है उसको इग्नोर कर देना. ठीक है, तो फॉर्मूला पहले हर एक प्रॉब्लम में लिखना है. व्हाट फॉर्मूला? 2BD plus FBD plus NRDD minus ORD. सुना? एवरी प्रॉब्लम 2BD plus FBD plus NRDD minus ORD. BD मतलब बैड डेट, FBD मतलब फर्दर बैड डेट, लॉस को बढ़ाएगा. NRDD मतलब ये साल का NRDD और लॉस को बढ़ाएगा. और ORDD मतलब लास्ट ईयर का NRDD जो ये लॉस को कम करेगा. ठीक है, अब
ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी दिया वो कौन सा आरडीडी है? ORDD. ओआरडीडी। ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी दिया वो कौन सा आरडीडी है? NRD. ओआरडीडी। ट्रायल बैलेंस में कौन सा आरडीडी मिलेगा हमेशा? ओआरडीडी। वंस अगेन रिपीट, ट्रायल बैलेंस में कौन सा आरडीडी मिलेगा? ORD. ओआरडीडी। ट्रायल बैलेंस में कौन सा आरडीडी मिलेगा? ORD. ट्रायल बैलेंस में कौन सा आरडीडी मिलेगा? ORDD. ओआरडीडी। ट्रायल बैलेंस में कौन सा आरडीडी मिलेगा? ORD. ट्रायल बैलेंस में कौन सा आरडीडी मिलेगा? So, but here we'll have to show all of this on the ORDD. 1 minute. Trial balance में which RDD will find? ORD. ORDD. Is this clear? NRDD will always appear in the adjustment, unrecorded item. NRDD will always appear in the adjustment. So NRDD will always have two effects. ORDD will always have how many effects? one effect. Why? Because inside trial balance. Because it is inside trial balance recorded item. Okay. So always remember ORDD will have just one effect in your trial balance. Okay. NRDD will always have two effects. One is in the formula and one is less from data. Is that clear? So ORDD, just one effect. Here, less from formula. Less from formula. लास्ट ईयर का रिजर्व ये साल का लॉस को कम करेगा. लास्ट ईयर का रिजर्व ये साल का लॉस को कम करेगा. तो माइनस फ्रॉम फॉर्मूला. देन नेक्स्ट आइटम इज sundry debtors and creditors. How much is your sundry debtor check? How much is your sundry debtor? 15,000. 15,000. Inner column or outer column? Sundry debtors asset होता है. Sundry debtors assets होता है. तो inner column बराबर है. Assets में inner column sundry debtors. Now, how many adjustments on sundry debtors? Check. How many dots? 2. One dot we have done, make another one. 2 dots. 2 dots on data. Put 2 dots on data. Why 2 dots? One is for that unrecorded sales and one is for NRDD. हाँ, one is for unrecorded sales and one is for NRDD. भी ध्यान से सुनना, 2 adjustments है. पहले क्या करना है? Unrecorded sales या NRDD या कोई भी ऑर्डर में चलेगा. लॉजिकली सोचो. First unrecorded sales. So the Why unrecorded sales? Debtors, but पहले एक्चुअल डेटर्स ढूंढो ना. सेल्स बाकी है ना रिकॉर्ड करना. वो करने के बाद एक्चुअल डेटर मिलेंगे. फिर बैड डेट्स होता है, फिर एनआरडीडी रिजर्व क्रिएट होता है डाउटफुल पे, है कि नहीं? तो आंख बंद करके कोई भी ऑर्डर में मत करना. हमेशा याद रखो थंब रूल फॉर डेटर्स. ऑल द अदर एडजस्टमेंट्स फर्स्ट, एफबीडी एनआरडीडी एट द एंड. ऑल द अदर एडजस्टमेंट्स फर्स्ट, एफबीडी एनआरडीडी एट द एंड. एफबीडी और एनआरडीडी हमेशा अंत में करने का, लास्ट में. तुम मेरे को बोलो, पहले तुम गुड्स बेचोगे कि पहले बैड डेट्स रिकॉर्ड करोगे? पहले गुड्स बेचोगे. गुड्स बेचोगे ना, फिर डिसाइड करोगे ये बैड है, ये शायद पैसा देगा कि नहीं देगा. एनआरडीडी, आर यू गेटिंग इट? तो पहले क्या करने का? अनरिकॉर्डेड सेल्स. तो वो वाला एडजस्टमेंट, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स. ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना? 15 plus 4 है ना अनरिकॉर्डेड सेल्स. कैन यू सी दैट? 15 plus 4 that gives us 19,000 unrecorded sales को add करके. Now I got my actual debtors. What are my actual debtors? 19,000. Now on this debtor I will check, is there any further bad debts? No. No. होता तो मैं माइनस कर देता. कुछ नहीं है. तो less FBD is nil, further bad debt is nil. So I will arrive at my NRDD now. What is my NRDD? What is my NRDD? Check. कहाँ मिलेगा NRDD बताओ? ट्रायल बैलेंस में कि एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट में मिलेगा. Adjustment. एडजस्टमेंट में मिलेगा. कितना मिलेगा एडजस्टमेंट में? देखो NRDD
5% बोला 5%. एक्चुअली इट इज अ लाइबिलिटी, लेकिन मैं इधर डेटर में से माइनस करके दिखाऊं प्रेजेंटेशन. 5% ऑफ व्हाट? 5% ऑफ 15,000, 5% ऑफ 4,000 या 5% ऑफ 19,000? 5% of 90. 19,000 एक्चुअल डेटर. मतलब मुझे लगता है कि 19,000 का 5% मतलब कितना होता है? आई थिंक 950 होता है ना ये. करेक्ट. 950 रुपीज का डेटर शायद मुझे पैसा नहीं देगा. नेक्स्ट ईयर शायद इतना बैड डेट्स होगा, तो मैं अभी से एनआरडीडी क्रिएट करके दिखा रहा हूं एज माय लायबिलिटी. आर यू गेटिंग दिस? नेक्स्ट ईयर शायद 950 का, जैसे लास्ट ईयर मेरे को लगा था 800 का होगा, ये साल मेरे को लगता है 950 का होगा. तो 950 का मैंने बना दिया है एनआरडीडी, और ये मेरा डेटर हो गया 18050. अब ये आपने फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे दिख रहा है 2BD प्लस FBD प्लस एनआरडीडी माइनस ORDD. मुझे बताओ बैड डेट्स कुछ हुआ ये साल? नील. एनआरडीडी FBD हुआ है कुछ? नील. एनआरडीडी कितना क्रिएट किया? 9. तो नेट नेट क्या हो गया? लॉस की गेन? Net loss. नेट लॉस. कैसा नेट लॉस? लास्ट ईयर का 800 था, उसमें तो कुछ बैड डेट हुआ नहीं, तो पूरा 800 का 800 फायदा हो गया, बच गया. और ये साल 950 का लॉस दिखाया एनआरडीडी करके, तो ये साल का 950 का लॉस और लास्ट ईयर का 800 का गेन बच गया. तो नेट लॉस इज ओनली ऑफ 150 रुपीज. नेट लॉस इज ओनली ऑफ 150. अभी ये 950 नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा? Next year का ORDD बनेगा. नेक्स्ट ईयर का ORDD बनेगा, और वो नेक्स्ट ईयर के लॉस को कम करने में मदद करेगा. समझ में आ रहा है? कुछ कुछ धीरे धीरे बैठेगा, जितना सम्स करते जाओगे ना और एग्जांपल्स, धीरे 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 फिर एक दिन वो बुद्धा के जैसा एनलाइटनमेंट होएगा. ओके, दिमाग के पीछे बत्ती चमकेगा कि दिस इज बैड डेट, दिस इज एनआरडीडी, दिस इज ORDD. ओके, सॉर्टेड. यहां तक एनआरडीडी का 2 इफेक्ट दिया है मैंने. व्हाई आई हैव गिवन 2 इफेक्ट्स ऑफ एनआरडीडी? It is a loss for this year and But it why has an 2 effect on the effects? next year. But why 2 effects? Adjustment. NRDD was in adjustment, so that's why less from debtor and P&L debit. Where was ORDD? Trial run. Trial run. RDD was trial. So it will have how many effects? One. Just one. Okay, just one. Less from the formula. Last year का recorded item है, तो just one effect. Then we come to sundry debtor, तो हो गया. उसके बाद creditor. Creditor पे जाओ. Creditor पे कोई डॉट है? Is there any dot on creditor? Yes, there is. Debtor और creditor दोनों को बोला था. Creditor पे क्या डॉट है? Unrecorded purchase. क्या करना है? अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न प्लस करना है कि माइनस? Minus. माइनस अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न. माइनस अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न कितना था अपना? 3,000. ये माइनस किया, क्रेडिटर मिल गया 13,000. What next we have is returns. Which one is which one? You know that now clearly. Which one is which one? Returns में डेबिट वाला is sales return 1,000 less from sales, and credit wala is purchase returns. Credit wala is purchase returns, so 500 is less from purchase. Got that? Debit wala is sales returns, credit wala is purchase returns. Machinery. Where do you put machinery? Machinery will go to assets. Is there any dot on machinery? Yes, yes. What is it? Less depreciation. At what percentage? 10%. That is 1,200. And net amount is 10,800. Correct? तो माइनस कर दिया.
Traveling expenses. Where do you put traveling expenses? So that is P&L debit. To traveling expenses, that is P&L debit. 3,000 rupees. Outer column, no dot. Cash at bank. Cash at bank, that is asset. Outer column, 1,000. Buildings are asset. Buildings are asset. Is there any dot on building? Check. Is there any dot on building? Yes. What is the Is it adjustment? depreciation? 20%. Depreciation 20%. So 25 minus 5 gives me 20. 25 minus 5 gives me 20. Then I have office expenses. That is P&L debit. 2,700. Outer column. Office expenses are P&L debit. Then advertisement for 3 years. Advertisement for 3 years. So where should I put this 3,000? Inner column or outer column? There is a dot, you remember? Advertisement will be dot. What is the Inner adjustment? column. What is the adjustment? 3,000 minus 2,000. Exactly. 3,000 minus 2,000. Outer column only 1,000. 2,000 was prepaid advertisement. So subtract it. 3 minus 2. Outer column 1. Then I've got drawings. Where do you put drawings? So less from capital. That is 2,500. Drawings is less from capital. Capital will go to liabilities, 30,000. Inner column. Capital will go to liabilities, 30,000 inner column. Then I have insurance. I'm writing here on top to insurance. P&L debit. Outer column 600. No dot. Then I've got general reserve. Where do you put general reserve? Where do you put general reserve? What is general reserve? What is general reserve? Liability. Why? Owner wants the profit to be shown separately. Owner wants the profit to be shown separate. Belongs to the owner, right? So general reserve is a liability. हो सके तो कैपिटल के नीचे दिखाओ. इंटरनल लाइबिलिटी है कैपिटल के नीचे एक दो लाइन छोड़ के. जनरल रिजर्व 25,600. 25,600. ओके. आउटर कॉलम में नो डॉट. हो सके तो कैपिटल के नीचे इंटरनल लाइबिलिटी है. अगर नहीं छोड़ा है जगह तो बाद में नीचे भी दिखा सकते हो, कोई बात नहीं, लाइबिलिटी में दिखाना रहेगा. Now come to the adjustment. Closing stock cost 25, market value 30. Which price will we take? The lower one. The lower one. तो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट में डाल दो. बाय क्लोजिंग स्टॉक 25,000. दूसरा इफेक्ट एसेट में दिखा दो. क्लोजिंग स्टॉक 25,000. ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स दोनों इफेक्ट हो गया. टिक करो. टिक आउट दैट एडजस्टमेंट. टिक इट. Closing stock, trading credit and assets. Trading credit and assets. Okay. Then unrecorded sales were 4,000. What were the two effects of unrecorded sales? You wrote that. First effect was add to sales, and the second effect was add to debtors. I think we have done both the effects. Yes. Take it out. Dots में दोनों effect हो गए हमारे. फिर unrecorded purchase returns. Unrecorded purchase returns. One effect is here, less from purchase. And one effect is less from creditors. Can you all see that? So both the effects done. Automatically dot के साथ ही दोनों effect हो गया. तो टिक करो, वो भी हो गया. Goods of 3,000 taken over by Kapil for personal use. I think दोनों effect बाकी है. दे दो. क्या जाएगा? गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. एक तो परचेज में से लेस करो तो ट्रेडिंग क्रेडिट. बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज.
बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज कितना है 3000 ट्रेडिंग क्रेडिट और कैपिटल में से लेस ड्रॉइंग्स बाजू में लिखने का गुड्स कितना 3000 ड्रॉइंग्स मतलब गुड्स कैपिटल में से लेस एक कैश ड्रॉइंग्स एक गुड्स ड्रॉइंग्स अभी दोनों इफेक्ट हो गया एक ट्रेडिंग क्रेडिट और एक लेस फ्रॉम कैपिटल करेक्ट टिक इट आउट provide depreciation on machinery by 10% and building by 20%. Tell me, have we given both the effect? Yes. No, but एक ही PNL दिया effect is less. one effect has been given. Yeah, less from machinery, less from building हो गया है ना कौन सा वाला बाकी है PNL वाला बाकी है ना अभी भी yes तो PNL में लिख दो to depreciation building and machine तो इधर बिल्डिंग आएगा आपका 5000 और मशीन पे कितना है तो आई थिंक इट इज 1200 so total comes to 6200 got that clear so अभी जाके दो इफेक्ट हो गए टिक करो then we have outstanding rent what are the two effects of outstanding rent outstanding rent का दो इफेक्ट क्या है वन इफेक्ट इज एड टू रेंट वो हो चुका है व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी वाला बाकी है तो वो लिख दो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 500 आउटस्टैंडिंग रेंट इज 500 गॉट दैट प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब आरडीडी विच आरडीडी एनआरडीडी की ओआरडीडी NRD. Why? Because it is for एडजस्टमेंट में दिख रहा है मतलब इट इज एनआरडीडी ये साल क्रिएट किया हुआ है मतलब एनआरडीडी गॉट इट सो व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ एनआरडीडी वन इज लेस फ्रॉम डेटर लायबिलिटी में दिखाने के बदले लेस फ्रॉम डेटर कैन यू सी दैट द अदर वन इज add to the formula एनआरडीडी 2500 मिला both the effects done take it out that. Did you get 2500? 150 था. अरे तो वो मैंने इरेज नहीं किया सॉरी ये ऊपर वाला फॉर्मूला मैंने नीचे वापस लिखा था आई डिड नॉट इरेज दिस वन दिस इज नॉट द फॉर्म ये अमाउंट्स नहीं है नीचे वाले अमाउंट ये रहा दिस वन ओके एनआरडीडी का इफेक्ट नीचे दिया हुआ है मैंने वो पहले एक्सप्लेन करते वक्त बताया था वही फॉर्मूला पड़ा हुआ था वो इरेज कर नीचे वाला फॉर्मूला है 2BD plus FBD plus NRDD minus Y मिला नेक्स्ट uninsured goods of 4000 are lost in transit uninsured goods of 4000 are lost in transit what are the two effects of goods lost in transit बोलो goods Trading lost credit and Trading credit minus and from credit. PNL debit. ट्रेडिंग क्रेडिट एंड पीएनएल डेबिट तो ट्रेडिंग क्रेडिट में यहां पर जहां पे गैप है इधर फिट कर लो बाय गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट बाय गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट दैट इज 4000 ट्रेडिंग क्रेडिट क्योंकि परचेज में से लेस करना था बाय गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड सेकेंड इफेक्ट इज पीएनएल डेबिट टू लॉस इन ट्रांजिट to loss in transit that is 4000 trading credit P&L debit now we have completed this trading account done P&L done balance sheet done हो गया सब कुछ कि एक एडजस्टमेंट बाकी है अभी भी there is one more adjustment left okay so your problem sequence yes problem sequence must be like this पहले ट्रायल बैलेंस खत्म करो फिर एडजस्टमेंट्स खत्म करो फिर हिडन एडजस्टमेंट्स पे जाओ
तो ट्रायल बैलेंस, फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट्स, फिर हिडन एडजस्टमेंट. तो हिडन एडजस्टमेंट में एक था अपने पास प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट? Trading debit and asset. पीएनएल डेबिट. पीएनएल डेबिट में लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, ये किया हुआ है. व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? सो दैट इज एसेट. प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, दैट इज एसेट 2000. ओके, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एसेट 2000. सेकंड इफेक्ट बाकी था, वो दे दिया. एक इफेक्ट लेस किया हुआ है, सेकंड इफेक्ट बाकी है, एसेट वो दे दिया. इज दिस क्लियर? वो भी एडजस्टमेंट ही था, नॉर्मल के जैसा ही, लेकिन खाली ऊपर पड़ा हुआ था ट्रायल बैलेंस, इसलिए हमने हिडन बताया. हिडन नाम दे दिया, बाकी वो नॉर्मल एडजस्टमेंट के जैसा प्रीपेड का दो इफेक्ट्स है, लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट एंड एसेट. गॉट दैट? वी कैलकुलेट योर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस क्या आ रहा है देखो. यहाँ पे पहले आउटर कॉलम में डाल दो सब अमाउंट्स. 126 minus 1 is 125 plus 4, 129,000. 129, ये 60,000, ये 59,500, 59,500, and this is the total of credit trading. क्रेडिट बढ़ा है ना ट्रेडिंग का. तो 132, 136, 156, 161, 161,000. एंड कितने का आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट? एनीवन हैज कैलकुलेटेड टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन? 34,500. 34,500. Bring it to your P&L by gross profit brought down 34,500. 34,500. Shut down your P&L. Shut down your P&L and get me the total of 161 100. sorry, 161 100 आ रहा है ना. what is that? 161 100. The balance of both credit side. The total of the credits. Total, okay. Total I'll write down. Total is 161,000. 161,000 is the total of trading credit. 1,61,000. वैसे P&L का टोटल करो. P&L का कौन सा साइड बड़ा है? I think क्रेडिट ही बड़ा दिख रहा है मेरे को. 34,500. 34,500 and to net profit carried down. To net profit carried down करो, कितना आ रहा है net profit? 13,350. 13,350, is that right? Anyone else is getting this? 13,350. Is this transferred to capital? 13,350 आ रहा है, चेक करो. ये भी ले लेना, ये पूरा डेबिट माइनस क्रेडिट. So I'm getting 12,850. 12,850. 850. Check. 12,850 आ रहा है कि 13,350 आ रहा है? चेक. 4 plus 6, 10,200, 11,200, 13,900, 16,900, 20,900, 21,500, 21,650, or इधर 34,500. $12,850. 12,850 is your net profit. Add it up to your capital. Net profit is 12,850. What is your capital figure in the outer column? 27 minus 2, 25, 24,500, 24,500, 34,500, 36,500, 37,350. 37,350. Balance sheet tallies at 77,450. 77,450. 77,450. 77,450. That's your solution. Check.
Okay. Last sum number 13. I'll just discuss. You have to solve it on your own. It's a small sum, very small sum. Sum number 13, 1, 3. Sum number 13, 1, 3. देखो मार्क करते जाओ. कैपिटल, वेयर विल राइट कैपिटल? क्विक. Liability. Drawings minus from capital. minus from capital. Opening stock. Opening stock. Trading debit. Trading First item जो लिख के रखते हैं ना, opening stock, purchase less return, sales less returns. Purchase and sales, trading debit and Credit. trading credit. Office salaries, P&L debit. Royalties, where do you write royalties? Carriage, freight, कुछ नहीं दिया है तो trading debit, direct expense. Royalties are trading debit. Trade expense, कुछ याद आ रहा है? Trade expense एक शॉर्टकट दिया था. गोसाम का फुल फॉर्म क्या था? गोसाम. जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिसलेनियस. अगर ये 5 में से कोई है तो ट्रेड एक्सपेंस गोज टू ट्रेडिंग. अगर 5 में से कोई नहीं है तो ट्रेड एक्सपेंस गोज टू पीएन. तो पढ़ो, इन 5 में से कुछ दिख रहा है? नहीं. कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है 5 में से, तो कहां जाएगा ट्रेड एक्सपेंस? पीएन. ओके. 5 में से एक भी नहीं है तो ट्रेड एक्सपेंस विल गो टू पीएन. इज दैट क्लियर? पीएन. एडवर्टाइजमेंट, पीएनएल डेबिट. मोटिव पावर, factory. So trading so debit. trading debit. Cash in hand, Asset. debtor creditor, asset and asset liability. Liability. ट्रेड एक्सपेंस का समझा सबको? ट्रेड एक्सपेंस गोसैम नहीं है तो पीएन. गोसैम का कोई भी आइटम है तो ट्रेडिंग. डेटर क्रेडिटर, एसेट लायबिलिटी. बैड डेट, वेयर डू राइट बैड डेट? वो ऑफिस P&L debit. पीएनएल डेबिट. पूरा फॉर्मूला ही लिख देने का. 2BD plus FBD plus NRDD minus ORDD. इन्वेस्टमेंट, Asset. asset. Bills receivable and bills payable, Asset and asset and liability. Motor van, asset. asset. Discount, कौन सा डिस्काउंट है ये? To assume it is discount. Debit है तो receive. Debit है तो expense आएगा. डेबिट है तो एक्सपेंस होगा ना, तो अलाउड. तो दैट इज डिस्काउंट अलाउड. वेयर डू यू पुट डिस्काउंट अलाउड? P&L debit. पीएनएल डेबिट. फर्नीचर, Asset. asset. Office rent, where do you put office rent? P&L debit. पीएनएल डेबिट. ऑफिस रिलेटेड सब खर्चा पीएनएल. परचेज प्रोडक्शन वाला है तो ट्रेडिंग डेबिट. प्लांट एंड मशीनरी, Asset. एसेट. Asset. प्रीहोल्ड प्रॉपर्टी, Asset. एसेट. रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? Purchase return. Purchase return. ओनली वन एडजस्टमेंट. Also क्लोजिंग it is in स्टॉक. credit balance. परचेज रिटर्न क्या करना है? लेस फ्रॉम परचेज. परचेज में से माइनस. क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 13,500. यू नो व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? ट्रेडिंग क्रेडिट एंड Trading credit Asset. and added to asset. TC/A. ओके. एक ही समय 10 मिनट्स या 15 मिनट्स ट्राई करो. जितना लगता है उतना खुद से ट्राई करो. अभी करो और टैली करो. ठीक है. अब भी 10 मिनट्स क्विक. डू इट ऑन योर ओन. स्टार्ट. अभी से लेक्चर 9:15 9:20 रहेगा डेली. ओके. खुद से करो. What is going on in college? And then So they are doing cash book right. what? Cash book चल रहा है. Petty cash book, you know. Okay.
cash book and in extra lecture seated the Subsidiary हो गया. certain subsidiary to that. In extra lecture they are doing subsidiary. Okay, okay. What about सोमैया का कोई है यहाँ पे? कोई नहीं है. What about पोदार? सर अभी तक जर्नल ही चल रहा है. जर्नल चालू है. हाँ, बेसिक वाला जीएसटी भी स्टार्ट नहीं किया. Oh. And HR? रिया गांधी. रिया हितांशी क्या चालू है इसका? और एसके में अभी वी जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट जर्नल. अच्छा अभी जर्नल स्टार्ट होगा. हाँ, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ अभी. ओके. Tell me, do you have any bad debts in the sum? Yes. How much? 200. Do you have any further bad debts in the adjustments? Nothing else. Nothing else. NRDD भी नहीं है, ORDD भी नहीं है. So simply it is 200. कुछ रिजर्व नहीं था, कुछ फर्दर बैड डेट नहीं था, तो जो बैड डेट था वो लॉस हो गया. कुछ कुशन नहीं था, लास्ट ईयर का रिजर्व नहीं था. ओके, तो दैट्स 200 लॉस.
So bills receivable is on debit side. Correct. This receivable is asset. Do you have any sales return in this sum? No sales return, right? Only purchase return. Less from purchase करो. Sales return है ही नहीं तो nil कर दो. Outer column लिख दिया. जो items है वो लिखो, नहीं है वो nil. वैसे bad dates में भी खाली bad And date if we omit sales return, just write buy sales on the. Yes. इधर भी नीचे खाली 2 bad dates लिखा तो भी चलेगा. Nil वाला नहीं लिखा तो चलेगा. करो. आ रहा है पोस्टिंग जम रहा है सबको? Any doubt in posting anyone? Single adjustment sum था. Single adjustment sum. How many adjustments you get in exam? तो max to max 4 or 5 adjustments. Okay. हमने जो प्रैक्टिस किया है, हम जो आगे भी करेंगे वो ज्यादा एडजस्टमेंट्स वाला करेंगे. प्रीवियस सम में देयर वर अराउंड 10 एडजस्टमेंट्स. इतना 10 एडजस्टमेंट्स वाला सम्स नहीं आता. दैट इज फॉर प्रैक्टिस. एग्जाम में गेट 4 to 5 एडजस्टमेंट्स का सम. आ रहा है पोस्टिंग जम रहा है. Balance sheet is tallying at 90 to 500. हो गया. हाँ. बोलो मेरे को टोटल क्या आ रहा है ट्रेडिंग का. 83,500 आ रहा है. जीपी कितना आ रहा है? 30 to 300. 30 to 300. ये बनेगा इधर बाय जीपी ब्रॉट डाउन 30 to 300. टोटल करो ENL का ये 30 to 300. How much is your net profit? Net profit है ना? 23,500. 23,500 is net profit. Transfer to capital. ये ऐड करो इसमें. नेट प्रॉफिट को ऐड. 23,500 टोटल 74,500. 500. 74,500 and tallies on 90 to 500. both the sides. Yes. 90 to 500. That's your sum. Check. Draw for 3 sums and keep in the next lecture. Okay. More varieties and keep revising the old adjustments. I'm not giving you to write. Trusting that you will revise. अगर रिवाइज नहीं किया और किधर पूछ लिया और नहीं आया तो सीधा बॉम्ब फटेगा. 10 टाइम आ जाएगा सीधा. So better keep revising, keep doing the adjustments again and again. Okay. That's it. All for the day. If you are finished, you can leave. We meet in the evening for BRS and then day after.